Assalamu alaikum everyone, this is Amir Ovaisi and again I welcome you on your favorite channel Easy English by Sir Amir. But before starting the lecture, if you have not subscribed this channel yet, click on the subscribe button and also click on the ring bell icon so you can also get all information and all updates of this video channel. Let's start the lecture today. Well, students, the topic what we have been learning these days the verb, and we have learned a verb in detail. That a verb talks about action, state, and time means present, past, and future. We have also learned that we have got two types of common state verbs. The very first state verb what we learned, that was be. Be means is, are, was, were, or been. And we usually use be state verb, and it talks about the condition and the existence of a subject. The second state verb what we learned, that was state verb have, and we usually use state verb have. It talks about ownership, position, illness, relationship, programming events, or characteristics. Today, the topic what we are just going to learn, that is very important topic, and you can say that your grammar is fully based on this topic, and this topic name is forms of verb. And usually what happens that people remember the forms of verb, especially since childhood. What we have learned, what we have been learning, that first form, second form, third form, and literally that has been always the hodgepodge in the brain, and we have never cleared the concept that where to use first form, second form, third form. But this time we are not learning as the name of first form, second form, third form. The topic what we have just started, that's called forms of verb, and we're just going to learn the forms of verb as per international standard. And as per international standard, now they're not using the first form, second form, third form. What they have been using, let's start learning. Well, do remember that normally people, they have the concept in their mind that a verb has got three forms. They are right. First, second, third form they have always learned. But today we are just going to learn more in detail that a verb has minimum 3 and maximum 5 forms. एक verb की कम से कम 3 और ज़्यादा कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5 फॉर्म्स होती हैं. इसके अलावा 6 फॉर्म कोई नहीं होती. अगर आपको कोई 6 फॉर्म बताता है तो उसको ज़रा इस चैनल का पता बता दीजिएगा. Then he will also learn, right? So well, students, let's start the forms of verb. The very first form of verb, जिसको आप लोग कहते हैं कि सर ये first form of verb है, ये first form of verb ठीक है, किसी हद तक लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सही है. लेकिन इस फर्स्ट फॉर्म का जो आजकल एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसको अब हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से जानते हैं. एज यू कैन सी हियर, दैट इज कॉल्ड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. इसको अगर आप और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोलना चाहते हैं तो उसको BFV भी कह सकते हैं. अच्छा, BFV बेसिकली होती क्या है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है कि बगैर एस के, बगैर ING के, बगैर पास्ट फॉर्म के, बगैर थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल के, जो एक्चुअल वर्ब होता है बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड डू रिमेंबर कि कभी भी आप डिक्शनरी के अंदर अगर आपको वर्ब के मीनिंग सर्च करने हैं तो कभी भी हम ING के लिहाज से सर्च नहीं करते, कभी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के लिहाज से नहीं करते. हमेशा जो वर्ब जो सर्च किया जाता है डिक्शनरी के अंदर, वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से किया जाता है. अच्छा, एक और बातों से एक और बात निकली तो मैंने बता दूं कि कभी भी किसी सेंटेंस में टू आ जाए और टू के बाद कभी भी आपने कोई वर्ब का इस्तेमाल करना हो तो हमेशा क्या लगती है? बेस फॉर्म लगती है. अब चाहे सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, आपने सेंटेंस किस में बनाना है? आपने टू के बाद बेस फॉर्म बनानी है. आपने सेंटेंस में क्या इस्तेमाल करना है? टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म इस्तेमाल की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो, यू वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स to go or she wants to go. I wanted to go, he wanted to go,
she wanted to go। so चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का सेंटेंस हो, जब भी टू आ जाए, जब कभी भी टू आ जाए तो उस टू के बाद हमेशा क्या लगती है, बेस फॉर्म लगती है। तो वेरी फर्स्ट फॉर्म व्हाट वी हैव लर्न दैट इज कॉल्ड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म के अंदर कभी भी एस और एस, आई एस, आई एन जी, सेकेंड फॉर्म ई डी, थर्ड फॉर्म वगैरह कभी कुछ नहीं लगती। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म। जो हम पुराना नाम फर्स्ट फॉर्म बोलते थे, अब उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? दैट्स गुड। अच्छा जी, सेकेंड फॉर्म का नाम सुनते साथ हमारे जहन में आती है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का नाम। जहां सुना आपने बोला ये तो पास्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है कि जो जब भी हम सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम पास्ट टेंस का नाम देते हैं, तो सेकेंड फॉर्म जो है वो हमेशा कहाँ इस्तेमाल होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में इस्तेमाल होती है, और वो भी सिर्फ अफर्मेटिव में। क्यों? क्योंकि जब आपने डिड नॉट लगा दिया तो डिड नॉट के बाद हमेशा क्या लगती है, बेस फॉर्म लगती है। सो द वेरी फर्स्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म इज कॉल्ड past tense. Got it? Let's go for the third form of verb. इस third form of verb को हम क्या बोलते हैं, अब हम third form के बजाय हम क्या बोलते हैं, that is called past participle. As you can see here, spelling here, that is called past participle. Past participle क्या होती है? Basically past participle ये हम इसको perfect sentences में use करते हैं। For example, go, went, gone. अभी जो गॉन जो बेसिकली क्या है, ये परफेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल कि प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होगा, या तो पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होगा, या पे फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल होगा। गॉट इट? दैट्स गुड। ओके, लेट्स गो फॉर द फोर्थ फॉर्म दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव फॉर्म। और कभी भी प्रोग्रेसिव का वर्ड आ जाए तो प्रोग्रेसिव का नाम सुनते साथ हमारे जहन में एक वर्ड आता है, एक सेंटेंस आता है, बल्कि टेंस आता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब प्लस आईएनजी। अब अगर ये वर्ब प्लस आईएनजी को अगर आप एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो ये हर जो प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस हैं इनमें आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये पता चल गया कि इसको आप प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोल सकते हैं, और लोग जो है इसको आमतौर पे वर्ब प्लस आईएनजी भी बोलते हैं। बट डू रिमेंबर, एक और बात से बात निकली कि कभी भी अगर आप इसको वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी कभी डायरेक्ट नहीं आता। सब्जेक्ट के बाद आपको कोई ना कोई बी फॉर्म लगानी पड़ती है, चाहे वो इज एम आर की फॉर्म में हो, चाहे वॉज यू वर की फॉर्म में हो, चाहे हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन की फॉर्म में हो। तो आपको कभी भी बी के बगैर आप डायरेक्ट कभी इसको एज अ प्रोग्रेसिव वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, शी इज सिटिंग, ही इज टॉकिंग टू मी, आई एम रिकॉर्डिंग माई लेक्चर। इट मीन्स दैट कि जब कभी आपने वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल करना, अब लोग कहते हैं सर आई गोइंग कभी नहीं हो सकता, यू गोइंग कभी नहीं हो सकता। तो कभी भी आपने प्रोग्रेसिव फॉर्म इस्तेमाल करनी हो तो आपने प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर, और फ्यूचर के लिए विल बी, या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आपने हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए आपने हैड बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में यही होना है हमारा टॉपिक, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी? ओके, इसके बाद फिफ्थ फॉर्म की बात आती है। फिफ्थ फॉर्म वो होती है बेसिकली जो कि एस और यस फॉर्म होती हैं, और एस और यस फॉर्म जो है बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होती है, वो प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होती है। और कहाँ इस्तेमाल होती है, जैसे ही के साथ गेउज आता है, शी के साथ गेउज आता है, आई के साथ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट आई टीच, यू टीच, वी टीच। लेकिन जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की, अब इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट 2 लेक्चर के बाद हमारा जब प्रेजेंट सिंबल इस्तेमाल हो जाएगा तो प्रेजेंट सिंबल में हमारा एक नया टॉपिक आएगा बाकायदा कि कहाँ पे आपने एस लगाना है, कहाँ पे ई एस लगाना है, और कहाँ पे आपने आई एस लगाना है। बहुत डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो वो वाला लेक्चर आप लाजमी सुनिएगा, उसको मिस नहीं करना है आपने। तो ये एस और एस फॉर्म जो है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल, इसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेंगे। सो व्हाट वी हैव जस्ट लर्न टुडे द टॉपिक व्हाट वी हैव लर्नड हियर, द 5 forms of verb. A verb has minimum 3 and maximum 5 forms, and a verb talks about action, state and time. Time means present, past and future. Got it? And we have learned the 5 forms. First form is called base form of verb, and we usually use BFE as a short form, right? And the past tense, that is called PT, or you can also use past tense. And third form is called past participle, and you can also use PP, that is called double P, that is called past participle, right? And for the progressive form we usually use verb plus ing, or progressive form that is called verb plus ing, and s or es, that is called present tense. So it's all about the forms of verb. Well, students, I am sure that in very short time
I have tried my level best to clear the concept of the forms of verb. अच्छा जी, अब ये जो forms of हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, अब ये जो forms of verb हैं, अब हमने इनको याद करना है, अब हमने इसको डिटेल में पढ़ना है और यही फॉर्म्स ऑफ वर्ब बेसिकली क्या हैं, आपकी बेसिक ग्रामर है। क्योंकि ग्रामर में आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आती, आपको ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आती, आपको नाउन या एडजेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब से खेलने में प्रॉब्लम आती है। और जिस दिन आपको इस फॉर्म्स ऑफ वर्ब से खेलना आ गया, इट मीन्स दैट यू नो ग्रामर वेरी वेल, you know tenses very well. So it's all about today's class, and I'm sure that you must have learned this topic easily, because the topic name is and the channel name is Easy English by Amir. So keep watching and keep sharing this channel with others, so other people can also learn as well. So it's time to see you. Goodbye, and till next lecture. Allah Hafiz.